Yes, sir. So let everyone come, then I'll start. So I've shared one file. Not visible. Yes, sir. Now is you. So what I'm saying is that I've shared one file, stock volume.java, and I would be sharing this another file, which is where we will be learning how to create a jar file through Eclipse. And there are some external jars we'll be requiring. So I would be sharing this jar with you also. So you need to upload them in your some Windows file system. And we created yesterday CDAC folder. So we have already uploaded this under CDAC. If not, you have to upload first. And then you have to give CDAC. So I'm sharing this file. And I have to share some external jars also. हेलो सर. Yeah, tell me. सर आपने जो कल वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया था वो भी एक बार सेंड कर दो ना चैट बॉक्स में. वो मैंने डिलीट कर दिया, कल बोलना चाहिए था ना. ओके सर, ठीक है. ओके सर, वो जो कल आपने पीपीटी से पढ़ाया था ना, वो भी पीपीटी आप शेयर कर सकते हैं. हाँ, मैं कर सकूँ. यस. मैं कोई सेव नहीं करता हूँ टेक्स्ट फाइल, कोई अगर टेम्परेरी बनाता हूँ. So I have shared two jars with all of you, and I've shared one program, stock volume.java, and I'm sharing one instruction file, how to convert your program into a jar file. And what is the plan? Let us understand the plan. First, we are going to upload the data on Hadoop. So have you started your VM, everyone? Yes, sir. So upload the data on the Hadoop, on the CDAC folder. That is what we understood yesterday. First thing we have to do, we have to upload the data on Hadoop side. So if I say Hadoop FS -ls CDAC, I think so yesterday I uploaded. No, I have not uploaded. Let me upload my data file. I deleted that file yesterday actually. -put under CDAC. So here we are uploading the file under CDAC. So this will create a single block because it's a very small file, 40 MB.
It's less than the block size property. So single block will be created. So we will be running maximum one mapper only in this case. So let us see the data here also. Sir, which file we have to upload on SDFS? The data file, na, nyc.csv, this one, which I gave you yesterday. We are going to take this as input data. This is our input file. And I'm going to discuss first the project. What is the project about? The use case is about. Is it clear, everyone, that we have to first upload the data and keep it on Hadoop side? Then only we can process the data. So if you go to CDAC here and click on the file name, this is my data file. So in this we have multiple 9 fields, comma separated. सर वो फाइल मेरे लोकल मशीन पे डाउनलोड नहीं हो रहा है. लोकल मशीन मतलब आपके बेस मशीन पे या विंडोज के क्लाइंट मशीन पे? मतलब बेस मशीन पे तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. Is anybody facing the same issue? No, sir. You're able to see these files in your Google Drive link, Yes sir. Yes, Yes, sir. I am able to see. but download नहीं कर पा रहे हो. Yes. Can you share your screen? I have given rights to everyone. So ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डाउनलोड नहीं होएगा, सबको डाउनलोड होएगा. हो रहा है सर. Share your screen. I want to check like what is the issue. So you are able to see. हाँ तो ऊपर एक take your cursor to the left hand side. Download option है ना? वो ना डाउन 2 बार डाउनलोड हो चुका है. Yes, पहली sir. बार भी डाउनलोड हो चुका है, दूसरी बार भी डाउनलोड हो चुका है. शो ऑल में जाओ ना, शो ऑल में. हाँ सर. अरे शो ऑल है ना नीचे राइट हैंड साइड पे, नीचे बॉटम पे, राइट बॉटम. राइट बॉटम. और इसको डाउनलोड्स में ओपन करो. मतलब डोंट ओपन इट, एक्सेल फाइल में खुलेगा बट नहीं सर वो गूगल शीट पे ओपन कर रहा था. नहीं, डोंट ट्राई टू ओपन इन गूगल शीट. That's why. बड़ा फाइल है ना, इट विल नॉट, हाँ इट मे नॉट ओपन समटाइम्स. हाँ, वो टाइम ले रहा था. हाँ, so there is no need to open that file in Google Sheet. Why you want to open it? So just copy this file and upload this file by FTP. FTP से upload करो. Don't try to open this file. Okay sir. So you may launch your FTP today again and upload your file and then upload it on Hadoop like this. Put command. So coming back to the data set,
we have 9 columns in the data, but for Hadoop, this is one string, one line. It's not a data field where every field is separate. So through Java program, we have to interpret the data accordingly. Currently, this is one string for us. And we have to break this record into array elements, and then we can read each array element separately. So if I try to make you understand each element, the first element is exchange name. Second element is stock ID. Third one is a date field. So this stock particular has some information for this date. So this is your date of the trading. And there are some information. There are some price movement captured on that day. So we have 4 prices: opening price, intraday high, intraday low, and closing price. So we have opening price, high price, low, and closing price of that day. And what is this? This is the volume. How much volume is generated on that day? So we have a volume, and then we have the adjustment closing price. So these are the 9 fields or the structure of the data set. So whenever the data is given to you, the first thing you have to do, you have to understand the data, how the data is and what is the different values given to you. Sometimes the data is coming without header, with header. So you can take the description from the source team, where who is ever providing you the data, they will also provide you the description of the data. Right? Now in this query, what are we trying to find? We are trying to find total volume generated for each stock. On different days, you'll find AEA is being traded. So this stock ID was traded on 8th February, then 5th February, 4th February, and so on. So likewise, there are 200 plus stock IDs in my entire data. So there are unique 200 plus. So we need to add up the volume for each stock and get the total volume generated for each stock. So how will I proceed, or how will I start? You understood the use case here, everyone? Have you understood the data? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. And what about the problem statement? Sir. Yes. So tell me now the mapper key value pair. What should be a key value pair? Key is a stock ID. Stock ID. Stock ID. Stock ID. Value will be Value is the total. Value is Volume. 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 So now that means from each line, I have to extract AEA and I have to extract the volume part. So we have to take this data like this. 194, 300, and so on. So we will be taking each line and will be extracting the key value pair. Then the data will get shuffled. All the keys will come together. All the values for common key will be together in a list. Like this, you can say. Right, everyone? Yes. Yes, And sir. then after this, what would be done? Suppose there are many stocks, ARR. Short and super. Short and shuffle तो हो गया ना, अभी आपके सामने हुआ है. Okay, हाँ, yes, sir. Addition होगा उसके बाद. Then we have to use a reducer. Reducer. Reducer का logic क्या रहेगा इसमें? You have to add. Add. So we'll be finding out each stock ID and we'll be running a sum on list commands, list values.
and then we'll get the total. So for this, I have written one Java code, stock volume.java. So what happens in program when we write our code in Java? We have to first compile the code. Am I right? Yes, sir. Compile करके क्या बनता है? Class file. Class file. Class file file. बनेगा. But the problem है कि आपके पास अगर 4 क्लास है तो 4 क्लास बनेगा. प्रोग्राम में अगर 4 क्लास डिफाइन किया है ना आपने, you'll be creating 4 classes. But here we'll be creating minimum 3 classes. One for driver class, one for mapper, and one for reducer. So if we are creating 3 class files, we cannot fire program 3 times to the resource manager. So what we will do, we'll push the 3 class files into a jar file. You know what is a jar? Anyone? Yes, sir. Now class file. Java archive file. No, it's a Java archive, but it is a collection of classes. Simple language में it is collection of classes. जैसे अपन एक zip file बनाते हैं ना Windows में, वो सब files को उसके अंदर merge कर देते हैं. मतलब just we put them into one box. Same thing, we are just putting these class files into one jar. That's it. That is the objective. Now this jar will be fired to which node? Come on, RM, no, sir. Resource manager. Resource manager. Resource manager. So that is what we intend to do. We intend to create this jar file in our Windows system. And then we will export this jar by using FTP to the client machine और वहां से फिर jar को execute करेंगे. You understood the plan, complete plan. So we have to create a jar file first. So that we can create anywhere. उसके लिए we can do it on our local machine, also Windows machine. And then we can export the jar or do the FTP to the client machine. And then from there we can execute. If you see the code, we are going to first create the jar, myjar.jar. And then we're going to run the jar from the client machine by this command, Hadoop jar, jar name, class name, input, output name. So you have to upload the myjar and the NYC to the client from your base machine. So in this document, we have given right from the beginning how to create the jar. So have you launched your Eclipse, the first step? Everyone on your base machine. Yes. Yes, sir. Yes, sir. You'll be getting a workspace launcher. Yes, sir. So you have Yes, to click sir. OK. And now in the Eclipse, you have to create a new project. So you know how to create file, new Java project. And give the project name CDAC. And tell me in your execution environment JRE, which Java version you are able to see. Is it 17 or 8. no 1.8 है 17 है, because if you see there are many. 17. To make it 1.8, make it 1.8, select 1.8 क्योंकि आपका जो there, if you go and check your Java version there here, we are using 1.8 in the client machine. So if I create a program on 17, it will be incompatible. So at runtime, I will be facing an issue. So make your project with 1.8 JRE. Have you selected 1.8, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Click finish. Okay, CDAC folder is created. Now what you can do, you can right click on the project name. Now look at the document. Just follow the document. Now you have to create a new class file in your project. So you have to go to your CDAC, right click,
and say new class. So in the name section, you'll be giving the program name stock volume, S capital, V capital. Single word, no space. And then click on finish. So what will happen? You will get a new class under the default package. Anyone is getting their package name automatically, because I'm getting a default package. Sometimes you get a package name also. Now you have to copy the code which you have downloaded from the Google Drive link. So wherever you have copied the code, just open that document. And copy the entire code, Control A, Control C. And delete this public class because nahi ye repeat ho jayega. First delete it and then paste it here. So entire code I have pasted in the stock volume.java. And you can save the file, Control save or save option. Can we wait for 2 minutes? Yeah. So let me know when to start, when all of you are on the same page. And remember, follow the document. सर वो क्लास का स्टॉक वैल्यू क्रिएट किया था वो Sorry. डिलीट करना है क्या? हाँ, वो जो ऑलरेडी आता है ना पब्लिक क्लास, नहीं तो वो रिपीट हो जाएगा ना, आपके प्रोग्राम में भी लिखा हुआ है और वहां भी मेरे प्रोग्राम में भी है वो अननेसेसरी रिपीट हो जाएगा। रिपीट होएगा तो एरर जनरेट करेगा। तो जो भी आता है बाय डिफॉल्ट पब्लिक क्लास स्टॉक वॉल्यूम, उसको डिलीट कर दो और पूरा पेज ब्लैंक करने के बाद पेस्ट कर दो। Otherwise that line will get repeated unnecessarily. You don't want to be, you want that line to be repeated. So my Eclipse is not showing 1.8. The Java. Same problem. Share your screen. Yes. Sir. But your system has 1.8, right? Yes, sir. Can you open the scroll bar, that drop down? Open the drop down, na? Which one? CDAC is a 1.7 है, 1.8 है कहीं? No, sir. No, sir. ठीक है, 1.7 लो, देखते हैं। 1.7 चलना चाहिए। 1.7 is a small, less than 1.8. Then finish. Yeah, finish करिए। Just go to your CMD. आपका जो खोला ना कंट्रोल पर अपना ये विंडोज का CMD कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे टाइप करो जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो उधर 1.80 बट इक्लिप्स में 1.8 क्यों नहीं दिख रहा है? Everybody is facing the same issue. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So have you installed a different Eclipse or same Eclipse? Like, I don't know. Sir, you. The link you given that we installed. So which, show me the version, help करो, help करके click करो उधर. Close this, close this. About Eclipse पे click करो, कौन सा वर्जन है? आपका कोई पुराना वर्जन है ये केपलर? मैंने केपलर तो, केपलर इज अ वेरी ओल्ड वर्जन, राइट?
So I have to download the latest ID. Eclipse. Yeah, that's what I gave you to download that latest version, right? Yes, sir. So I'll download it from that same site. Yes, sir. Sir, link is sir, his version The- is different than ours. We are given the link. We are download from the. Sahil Sir, uninstall this and download एक another. बार वापस करके दिखाए कि वो कैसे फाइल अपलोड कर. मैं दिखाता हूँ. स्टार्ट से दिखा. अगर 1.7 नहीं होगा तो we have to see. अगर 1.7 में ट्राई करते हैं, because 1.7 is less than 1.8, तो चलना चाहिए. Okay, so in the meantime, we just try to manage. You can do it after the class. सर मैंने वो Yes. न्यू प्रोजेक्ट तो बना दिया लेकिन उसके बाद क्या करने का है? मेरे को शो नहीं करना. एक मिनट. Can you stop share it? Yes. सर कैन आई शेयर? Yeah. You want to share? यस सर, आई वांट टू शेयर. Okay, ऐड share कर रहा हूँ it. सर मुझे. सर मैंने वो CDAC का जो नया प्रोजेक्ट है ना, मतलब उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया सर. हाँ, तो now go to create a new Java project ना. इधर इधर इधर. Third option. हो गया ना आपका? एक मिनट. This is the new one. बनाया ना आपने प्रोजेक्ट? अभी न्यू करके क्लास बनाओ. बट आपने 1.8 दिया ना जावा? सर वर्जन कौन सा लिया है जावा वर्जन? 1.8. गुड. क्लास नेम स्टॉक वॉल्यूम दो. एस कैपिटल वी कैपिटल. सिंगल वर्ड. वॉल्यूम ना सर? हाँ वॉल्यूम. स्टॉक वॉल्यूम. बस बस हो गया. फिनिश कर दो. ये पूरा डिलीट कर दो और जो मैंने कोड दिया ना गूगल ड्राइव पे, हाँ उधर जाके इधर लाके पेस्ट कर दो. सर इधर है. स्टॉक वॉल्यूम है. इसके बाद क्या करना है सर? ठीक हो गया. बहुत सारे एरर्स मिलेंगे आप लोगों को, हाँ सर. राइट? Yes, sir. So now we are getting these. Can I begin or like should I wait? Everybody has come to this stage. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, now why these errors are coming? Because we are using certain class files, text class, long writable. So we cannot use them. For that, I have to add some external jars. So look at the document, step number 5. Am I sharing my screen? Yes. Yes, sir. यस सर. We can see step number 5, how to add external jars. Have you downloaded these 2 jars from Google Drive? यस सर. Yes, sir. And don't save it in downloads. Keep it in some separate folder. कभी वो बाद में delete हो जाएगा तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं आपका. So उसको डाउनलोड से निकाल के कहीं सेव कर लो, मतलब प्रॉपर फोल्डर में. तो डाउनलोड्स का आपने फोल्डर का भी पूरा डिलीट मार दिया, जैसे डाउनलोड्स भर गया आपका, डिलीट मार दिया, तो ये फाइल मिलेगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम को. So copy these files into a separate dedicated folder. Create a folder on your system. Hadoop jar करके एक फोल्डर बना दो, उसके अंदर सेव कर लो दोनों जार्स. Because if you try to read from downloads, today you can do it. Tomorrow if the downloads folder is deleted, then the jars are gone, then you will not be able to access the jar in your program.
Done, everyone? Yes, Have sir. you copied both the files to a new folder in your system? Yes, sir. Yes, sir. Now, how do we go about for adding external jars? We have to right click on the Hadoop project. So right now the project name is CDAC. And there's an option called build path, configure build path. So right click on your CDAC project, go to build path and configure build path. And then follow the document. In this B part, it says select the libraries tab and then click on add external jars. So select on libraries tab and click on add external jars. Could you repeat? Sir, मैं repeat करूं? yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. On your project name पे right click करो, go to build path, configure build path. मिला configure build path? Yes, sir. Yes, sir. And when you select this, आपको 5 टैब मिलेंगे. Select the libraries tab. So उसमें already 1.8 is added to your library. And you have to select add external jars. Don't select the first option, a second option, add external jars. And then now search for your jar. Sir, which option? Second. Add external jar. JRE system library Java AC 1.8. Add external jar select करो ना, उस पे क्लिक करो. सर अभी जो हमने नया फोल्डर बनाया है उसको अपलोड करना है क्या ऐड? वो दोनों जार ऐड करने हैं. दोनों जार ऐड कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे आपने सेव किया वहां पे जाओ, सर्च करो और ऐड कर दो. सर उसका एक्सटेंशन सेम रखना पड़ेगा. एक्सटेंशन क्यों सेव करना पड़ेगा? तो जार अपने आप बनेगा. वो बना है. दोनों जार ऐड करो, Hadoop कॉमन और Hadoop कॉमन मैप रेड्यूस. Hadoop मैप रेड्यूस क्लाइंट को. और उस फोल्डर में जाने के बाद कहाँ? लाइब्रेरीज में, उसके बाद ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करना है. सेकंड ऑप्शन. नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ मॉडल पाथ और क्लास पाथ ही आ रहा है. ये तो लाइब्रेरीज में नहीं है. लाइब्रेरीज में नहीं. लाइब्रेरीज में लाइब्रेरीज में है. ओके, शेयर योर स्क्रीन. ओके. एक्चुअली आप लोग का कुछ लोग पुराना वर्जन यूज कर रहे हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम होता है. सर हाँ, क्लास पाथ पे क्लिक करो. क्लिक ऑन द क्लास पाथ. बड़ा ऑप्शन जो. हाँ, क्लिक करो. अभी ऐड एक्सटर्नल जार आपका हाईलाइट हुआ. राइट हैंड, टेक योर कर्सर टू द राइट हैंड साइड. सर हियर. या क्लिक देयर. हाँ हाँ क्लिक करो ना ऐड एक्सटर्नल जार पे. कर्सर आपका राइट में लेके जाओ ना उधर. कर्सर फ्रीज हो गया. ब्रिज किधर हुआ आपका? चल रहा है ना कर्सर? नहीं, वो मतलब मूव नहीं हो रहा है ठीक से. हैंग हुआ. इसके बाद क्लिक ऑन एनोटेट किया हुआ दिख रहेगा तो एडिशनल एक्सटर्नल जार. हाँ, उधर क्लिक करो. अभी आपने जहां जार सेव किया उधर जाओ, उस फोल्डर में जाओ. डाउनलोड्स में होगा. डाउनलोड वाला जार नहीं चाहिए नहीं नहीं, मैंने डी में किया है. दैट इज अ रॉन्ग कर्सर प्रैक्टिस. आपका माउस में प्रॉब्लम है एक्चुअली. हाँ, स्टॉप शेयरिंग करते हैं. सर वो जीआरई सिस्टम लाइब्रेरी के आगे ब्रैकेट में हमारा सिर्फ जीआरई आ रहा है. जा 1.8 नहीं आ रहा है सर. 1.7 आता है. 1.7 आना चाहिए. अगर 1.7 सिर्फ सेलेक्ट जीआरई ने 1.8 ही सिलेक्ट किया मैंने, पर अभी सिर्फ जीआरई आ रहा है. अच्छा, do one thing, go to your CDAC project and go to properties. ओके.
CDAC and go properties. to Java compiler. Where is Java compiler? Java code cell के नीचे होना चाहिए. Sir, can I share my screen? Yeah, share it. Okay, sir. है ना, Java compiler है ना? Properties. Okay. Compiler है ना? Java compiler. Okay. आपने 17 सेलेक्ट किया है. देखो 17 सेलेक्टेड है. सर 1.80 किया था मैंने. 7 कैसे हो गया? नहीं, सिलेक्टेड मेरा भी 17 है. फर्स्ट टाइम मैंने हुआ था, मैं डिलीट करके फिर से किया. ओके ठीक है सर, मैं डिलीट डिलीट. हाँ डिलीट ड्रॉप करो उसको, पूरा पैकेज को ड्रॉप करके नया बनाओ. ओके सर, वो कहाँ से करते ड्रॉप? परीक्षित डिलीट. हाँ डिलीट. तो 4 फाइल ऐड करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज कर दिया कुछ हाँ और अप्लाई एंड क्लोज कर दो बस. तो 1.80 है. नहीं, आपका ऑप्शन, आपने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना. यस यस. आपका जो रेडियो बटन था ना, आपने हाँ, हाँ, डिफॉल्ट हाँ, जेआरई सिलेक्ट किया था. ओके ओके ओके. अभी बराबर है. फिनिश करो. अभी एक्सपेंड करो. आया 1.8 देखो ब्रैकेट में. यस सर. तो आपने क्या किया था, वो नीचे वाला आपका रेडियो बटन नीचे वाला सिलेक्टेड था. ओके 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 सर, गॉट इट. तो Thank you, बाय डिफॉल्ट 17 ले रहा था. ओके ओके. थैंक यू सर. So after adding both the jars, have you noticed that all your errors are gone? यस सर. Yes, sir. यस सर. बट नीचे एक वार्निंग दे रहा है सर. किधर है वार्निंग? मेरे पास तो नहीं है. हमारे यहाँ पे है सर. Warning to items. वार्निंग बनी. बिल्ड पाथ स्पेसिफाइज एग्जीक्यूशन ऐसा कुछ था. यस सर. I don't know. We'll see that what is the warning. So has everyone reached this stage? I want everyone to come to this stage Yes, first. sir. यस सर. No, some people are still working. I have downloaded the recent ID. Mhm. So what to do after that? After I have copied all Open- the. Open the document. Now this document is all the steps are given. Launch your Eclipse Yes, I have done that. Yes, sir. and follow these steps one by one. So we have I'm done till Yes, I am. step number 5. Sir, there is no GRE करके warning. Yeah, Rahul, tell me. There is no GRE installed. It's warning image. Build path. Share your screen. Rahul, are you sharing your screen? Yeah, share it. हाँ, the problem है कि आपका वो बना है. That is your there is a default package. Package आपका default नहीं है. देखो. Your stock volume is under CDAC. So you have to add one line. Package CDAC. पहला लाइन पे ना ऐड करो पैकेज CDAC. मेरा डिफॉल्ट पैकेज था इसलिए मुझे ऐड करने का जरूरत नहीं है. सेमीकोलन. ठीक है, एरर गया. अभी सेव करो, कंट्रोल एस. तो इसमें 4 फाइल एक ही अपलोड किए. सॉरी सर कर रहा हूँ कंट्रोल एस पर. रेफरेंस लाइब्रेरीज में हडूप के 2 जार फाइल रहने चाहिए. हाँ, वो दिखेंगे. रेफरेंस लाइब्रेरीज खोलो लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको 2 जार दिखेंगे. दोनों जो जार ऐड किए ना, वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट नाउ. सो नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास बनाओगे ना, कोई नया क्लास, उसके लिए जार ऐड करने का जरूरत नहीं. So those who have a package, please add a package name. Package name. सर ये warning अभी भी दिखा रहा है. Don't worry about the warning. Okay. Okay, everyone clear?
Yes, sir. अच्छा सर वो पैकेज का नाम देने के बाद क्या करेंगे सेव करने के बाद? नहीं, आपका पैकेज डिफॉल्ट है कि कोई पैकेज आ रहा है स्टॉक वॉल्यूम के? Where is your stock volume dot java? Is it under default package or is it some package name is given here? Under Default default package. If there is no, if there's a default package, no need to add. If you have a package name, then you have to add package here. Package name. सर पैकेज नेम में हमने जिस फोल्डर में वो सेव किया है वो क्या? अरे पैकेज नहीं, नेम बना CDAC. होगा CDAC है ना पैकेज। CDAC. नहीं, ये पैकेज नेम नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट नेम है। पैकेज नेम आपका यहाँ पे आएगा SRC के अंदर। ऐसे के अंदर अगर डिफॉल्ट पैकेज है तो जरूरत नहीं है वो लाइन का। अच्छा डिफॉल्ट पैकेज है। हाँ, तो आपको ये जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जिसका डिफॉल्ट नहीं है उसको ऐड करना है ना। जैसे भी राहुल का डिफॉल्ट नहीं था, राहुल का CDAC आया था। सर वो वार्निंग कुछ इशू नहीं करेगी ना कोड? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, forget it. Now Eclipse में क्या होता है, we not need to do Java C. आप लोग Java C करते हो ना कंपाइल के लिए? Yes, sir. हाँ सर। So it's not required. Automatically जब आप Control S करोगे ना, इसको सेव करोगे ना, the file get compiled. So in this we have one driver class, and there are two inner classes, map class and reduce class. So we have 3 classes. So that means how many classes you will be creating after compiling? 3. And we can find them in our Eclipse workspace folder now. So remember while launching, you got that path. Yes. So go to that path wherever your Eclipse workspace launcher told you that path. My path was user Sunbeam Eclipse workspace. Now you can see CDAC folder is created. Or CDAC के अंदर there are bin and SRC. SRC will have the Java code, whereas bin file will have the classes, 3 classes. See, so 3 class files are generated. So kindly confirm, are you able to see all the 3 classes? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now look Sir, at the, हाँ बोलिए। वो पाथ भूल गए कौन सा लिया? पाथ तो नॉर्मली आपका वो C यूजर नेम रहेगा Eclipse का। उसी में डिफॉल्ट रहेगा। हाँ डिफॉल्ट ही था ना? हाँ डिफॉल्ट, तो फिर यूजर में जाके हाँ यूजर में तुम्हारा नाम होगा जय है ना? हाँ तो So if I run this, if I debug this code, it's showing me an error of class path does not exist. You can't run the code. You are trying to run the code from here. Oh, yes, sir. No need to run the code. Now we have to make a jar and execute from the client machine. This Eclipse is only used for creating jar. We are not supposed to run the code from here. Yes, sir. Now we got 3 classes. What are we supposed to do? We are supposed to merge these 3 classes in one jar file. So what I plan to do, I need to create one jar and have all the 3 classes here. In the single jar. And to do this, I have given you the step number 6. If you look at the document, there's a how to create a jar file from class files. So create the class, create a jar file by going to the project name, right click and use export option. This one, export. फिर से बताना एक बार। फिर से Right click, export. Okay.
When you click on export, you'll get this option, install Java, general install Java, select Java option and select the first option, jar file option. And click on next. So here you can save your jar wherever you want to. I am saving in Hadoop jar folder, my jars. And give the jar name. I've given myjar.jar. So this is your jar name. आप कहीं भी जाके उसको सेव कर लो विंडोज पे, C drive, D drive, E drive, F drive, whatever drive you have. सर फाइल का नाम क्या रहेगा? myjar.jar. सर ऊपर कुछ चेक भी करना है क्या? नहीं कुछ चेक नहीं करना है, ऑलरेडी चेक्ड है. CDAC सिलेक्टेड है, क्लास पाथ प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है. हमारा नहीं. Okay, check it. सेव करने का कैसे? Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. और फिर सब बाद में क्या करना है? फिनिश करना है क्या? Finish. Click on finish. नेक्स्ट ऑप्शन है सर उसके बाद? नहीं खाली finish, no next. So anybody got any error while creating the jar? jar failed हुआ किसी का? बन गया jar? It showed me exported with warnings. Sorry? Showed me exported with warnings. हाँ, that is okay. Warning है, कोई आपके सिस्टम में कुछ warning होगा चलेगा. But it should not be failed. So warning is not an issue, we can manage. फिर से जार फाइल क्यों बनाएंगे? तो जार को भी एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से रन करेंगे क्लाइंट मशीन से. अच्छा. Because we cannot run it over Windows ना. Windows से कैसे फायर करेंगे क्वेरी? This is our program now. मतलब अभी ये अपन Hadoop पे अपलोड करेंगे. Hadoop पे नहीं, क्लाइंट पे. रिसोर्स मैनेजमेंट क्लाइंट पे ना, क्लाइंट से रन करें. कल क्लाइंट से अपन ने फाइल अपलोड किया था, पुट कमांड. हाँ सर. अभी नाउ FTP करो. हेलो सर. या फाइल का सिर्फ पाथ देना है ना? फाइल का पाथ देना है ना, मतलब जहां पर जिस फोल्डर में फाइल है वही पाथ देना है ना सिर्फ उधर. हाँ, कहीं भी विंडोज पे सेव कर लो ना. आप अपने हडूप जार में सेव करो ना, उसी फोल्डर में जहाँ हडूप जार आपने बनाया है. हाँ सर. तो आपको याद रहेगा सब जार एक ही जगह पे है. Now import your file to your client machine. अपलोड करो myjar.jar. हेलो सर. या मैम. सर ये जार फाइल में ब्लैंक आ रहा है, मतलब कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है मेरा जब एक्सपोर्ट किया तब. ब्लैंक आ रहा है मतलब नंबर ऑफ बाइट्स कितना है उसका जार का? 3 KB है. तो है ना, फिर ब्लैंक नहीं कैसे? मतलब ये जार फाइल है, मतलब वो बॉक्स में जैसे आपका पाथ लिख के आ रहा है ना, वैसे इसमें कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है. हाँ, तो आपको पाथ सिलेक्ट करो ना, ब्राउज ऑप्शन है ना साइट में, ब्राउज. हाँ उसमें मतलब अच्छा. सर मुझे मैसेज आ रहा है. अरे फोल्डर सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको सेव करना है और फाइल का नाम दे दो myjar.jar. ओके. हेलो सर. हाँ या मुझे पॉपअप विंडो आ रहा है, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट? यूजर्स नो. तो आपने क्या दोबारा बनाया अभी जार? नो सर, जहाँ पे मैंने वो फाइल रखी है ना, वो फाइल का सिर्फ पाथ दिया है उस फोल्डर का. नहीं, शेयर करो स्क्रीन. एक सेकंड. उन्हें नाम नहीं दिया होगा फाइल को. ओके. myjar.jar दिया है आपने नाम. कौन से उस फोल्डर को क्या सर? अरे आप शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ. सर ये वाला. अरे ये नाम आपने मैप रिड्यूस क्लाइंट क्यों दे दिया? तुझे पाथ नहीं देना है, तुझे एक्सपोर्ट करना है myjar फाइल. ओके. ये पूरा डिलीट करो आप, ये नहीं तो आप इसको डिलीट करो. राइट क्लिक एक्सपोर्ट करो, जावा में जाओ, फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट भी ब्राउज करो.
फोल्डर जहाँ पे सेव किया है वो फोल्डर लेके आओ बस हाँ बस किधर है ये, इसमें है। हाँ बस ये फोल्डर, बस यहाँ पे उसको, यहाँ पे फाइल नेम दो myjar.jar। इस फाइल को सर? नहीं इसको नहीं यार, आपने नई फाइल को खाली सुजीत फाइल नेम खाली इधर आप हाँ फाइल नेम में जा myjar.jar टाइप करो, अभी सेव करो। अभी यहाँ पे इसको, कैन यू एक्सपैंड योर स्क्रीन, आई वांट टू सी द फुल पाथ। हाँ देखो अभी myjar.jar सेव हुआ है आपका, राइट? यस सर। अभी फिनिश करो। थैंक यू सर। हेलो सर। या मैम। सर यहाँ पे एरर दिख रहा है, 43 एरर्स। हाँ तो आपने वो 2 एक्सटर्नल जार्स ऐड किया सिमरन जी? यस सर। शेयर योर स्क्रीन। सर वो जार फाइल का पैकेज CDAC लिखा नहीं होगा सर ऊपर। डिफॉल्ट है, जरूरत नहीं। नहीं इंपोर्ट जावा के ऊपर सर पैकेज CDAC लिखने के बाद हो जाती है एरर सब। सेव कर। अरे मैम, योर क्लास नेम इज डिफरेंट एंड प्रोग्राम नेम इज क्लियर डिफरेंट. You give volume with N. See the name. Hello. Yes, sir. Your class name is different. You are given stock volume with N. और अंदर प्रोग्राम का नाम है पब्लिक क्लास stock volume with E. So delete this stock volume, recreate it. Right click को delete करो. Delete option ऊपर है. हाँ. Now go to CDAC. Right click, new class. Stock volume with letter E. E. Volume. Now delete these 2 lines. Yeah, delete those 2 lines and copy and paste the code. And then I think so error should not come, hopefully. But you have not placed your jars in some good folder. Huh? You are still using from downloads. I told you not to do that. No, sir, I have shifted it somewhere else. But still you are using from downloads. I can see user downloads. You can't delete like this. I'll tell you how to delete. You can't delete like this. You have to go to CDAC, right click, build path, configure build path, select both the jars. See, it's now missing. That is why it was not able to see. Because आपने remove कर दिया ना बाद में, वो बाद में वो मिला ही नहीं उसको. Remove it. अभी वो मिसिंग दिख रहा है ना, इसलिए जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा. Apply close. Now first add the program here. Yes, sir, I'll do that. And then add the jars. Yes, sir. Yeah. Because what you did, you shifted the jars. So those jars were not available afterwards. So this is what happens when you shift the jars or you delete the folder by mistake. Then the jars are not available to the program and then all errors comes. That's why the word missing was coming there in the jar section. So please transfer your jar to your client machine, everyone. So you're supposed to transfer myjar.jar, this one. And you can see here ls myjar.jar is available. And check the contents of the jar by this command, jar tvf jar name. You can see all the 3 classes are there in this jar. So jar is nothing but a
collection of classes, you can say. So we have the driver code, we have the mapper code, and we have the reducer code. सर वो शेल से लॉग आउट हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो उधर टाइम बढ़ा नहीं सकते, कुछ है? वेब शेल का? हाँ सर। मेरा तो लॉग आउट नहीं हो रहा है, क्यों? हाँ सर हो रहा है, हम मेरा मतलब थोड़े टाइम बाद इनएक्टिव होने पे सर होता है थोड़ा। हाँ, थोड़ी होता है, देर मेरा भी मतलब होता कि है। वापस करो ना, मेरा भी हुआ। सर वो सेकंड वाला कमांड क्या करता है? Second command is telling you how many classes are there in the jar. Jar is just a container, na? Collection of classes. So it will tell you how many classes are there. हमने ये तीनों फाइल को कंबाइन करके एक जार बनाया ना एक्सपोर्ट में। सर ये मेटा क्या होता है? मेटा मैनिफेस्ट कुछ होगा यार, नहीं पता, कुछ इंफॉर्मेशन होगा अबाउट क्लासेस। It's a very small 25 bytes है। But you have to just worry about these 3 class files. अगर आपका एक भी क्लास फाइल यहाँ पे कम है, शॉर्ट है, your program will not run. सर वो जो डॉलर मैप क्लास है वो इनर क्लास है? हाँ, वो इनर क्लास है। So please can you tell the import step once again? क्लाइंट पे पुट करना है ये? नहीं, अभी यहाँ से एग्जीक्यूट करना है, फायर करना है, पुट थोड़ा करना है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे ना, you have to fire the query. So command is hadoop jar myjar.jar. Now class name is stock volume, so just put stock volume. And those who are using package, उनको पैकेज का नाम देना है पहले, क्लास नेम से पहले। सपोज किसी का CDAC पैकेज है, so you have to give like this. सर वो क्लास पाथ और प्रोजेक्ट का साइज अलग अलग होता है क्या? होता होगा, अभी वो मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। सर अभी जो आपने टाइप किया ना लास्ट वाला कमांड, उसका मेरे को यूज बताइए। इसका this is the command we are firing to the system. We are going to run this code to the Hadoop system on the NYC file. So this is a program file we are firing to the Hadoop system, which will help us to process the data and get the result. तो इसके अंदर क्या हमने मैप रिड्यूस कोड लिखा है, तो मैप रिड्यूस कोड अभी एग्जीक्यूट होएगा थ्रू यार्न। सर वो ls myjar.jar से फाइल नहीं शो हो रही है इधर सेल में। हाँ, मुझे भी नो सच फाइल और डायरेक्टरी आ रहा है मैसेज। आपने FTP नहीं किया ना, FTP करो ना। सर वो फाइल का नाम एज इट इज देना पड़ता है वहाँ पे। स्मॉल कैपिटल की गड़बड़ होती कभी कभी। ये FTP पे अपलोड करेगा सर? अरे जार को FTP किया आपने क्लाइंट मशीन पे? Have you transferred the file to your client machine? नो सर। हाँ, तो कैसे दिखेगा आपको फिर? आपका विंडोज का अपने आप अपने थोड़ा चला जाएगा क्लाइंट मशीन कहीं दूसरी जगह बैंगलोर में बैठा है। And now the input path cdac/nyc.csv. सर अगर डिफॉल्ट पाथ है तो जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने CDAC दिया ना, पूरा पाथ नहीं दे रहा हूँ, user/user पूरा पाथ नहीं दे रहा हूँ। And out1, so out1 फोल्डर मेरा एक नया फोल्डर बनेगा, so we have to give a new folder every time, and this folder will have the part R00 file. So we are now firing the query from our client machine to Hadoop system, and this query will be sent to which node? Name node. RM node पे जाएगा यार, रिसोर्स मैनेजर ना। प्रोसेस रन कर रहे हैं ना,
रीड राइट थोड़ा कर रहे हैं, रीड राइट करेंगे तो नेम नोड को जाएगा, जी सर। प्रोसेस कर रहे हैं तो रिसोर्स मैनेजर को जाएगा. So now I'm running the code. So launching NC connecting to resource manager. First line आया connecting to resource manager. And map reduce process start हो गया. Map 0%, reduce 0%. So this information are called counters. सर मुझे कुछ तो अलग ही आ रहे हैं. Wait, let me complete my explanation. These are counters. So we'll understand what are these counters in a moment. But you can check your data on Hue under CDAC. You must have created one output folder. उसके अंदर file name बनेगा part R00, which I told you yesterday. There'll be underscore success file, 0 byte file. Huh? So if you open this, you'll get the complete output. Every stock ID, and you see the stock IDs are sorted alphabetically, because at the time of sort and shuffle, the stock IDs get sorted. और हर stock ID का total volume generate हो रहा है. Total कितना volume हुआ है हर stock में. तो सबमिशन करवाएगा. It is a result created ना, this is result बन गया ना हमारा, output बन गया हमारा. सर एग्जीक्यूशन का कैसे करते हैं अभी जो फायर किया. So this is the query. Hadoop jar name, class name, and then input and output. This is input path. And this is output path. This is class name. Class not found. आपका पैकेज का नेम देना पड़ेगा. पैकेज का नेम यहाँ पहले देना पड़ेगा आपको. CDAC पैकेज जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना CDAC स्लैश ऊपर, वैसे देना पड़ेगा, नहीं तो क्लास नॉट फाउंड आएगा. सो दिस इज अ जार नेम. सो जार के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, सो वी हैव टू गिव द ड्राइवर क्लास नेम ऑलवेज without extension. Now we don't need to give dot class, we just need to give the class name. So this is input and this is output. So out one folder will be created. You can't write to an existing folder. Hadoop never allows you to write to an existing folder. You have to create a new folder every time. So can you help me? Yeah, share your screen. You want to share your screen, right? Yes. Share it. तो आउट फोल्डर में पार्ट 5 बनेगी क्या? हाँ राइट. आपका एरर देखो, एरर क्या है. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा लाइन पढ़ो, आगे पढ़ो, एंड तक पढ़ो ना. नेम सर्विस, ये आपका होस्ट नेम है, यूजर बिग डेटा माइंड CDAC. तो आपने अपलोड ही नहीं किया डेटा फाइल, NYC फाइल अपलोड नहीं किया आपने. तो कैसे करो सर, बताइए जरा. LS करो ना अपने सिस्टम में, LS-L करो, LS करो. NYC फाइल है ना आपके पास, अपलोड करो उसको पुट करके. Hadoop FS -hyphen put nyc.csv CDAC. Enter. अभी रन करो Hadoop jar run command. You can use up arrow. Run it. ठीक है, चला. हो गया सर. चल रहा है. तो सर कहाँ पे चेक करना है सर? चेक कहाँ पे करना है सर उसे? आप बताओ किधर चेक करोगे. आपने आउट वन फोल्डर दिया है, आउट वन फोल्डर कहाँ बनेगा बताओ.
सीडैक के अंदर। हाँ तो सीडैक में जाके चेक करना, पहले बनने तो दो, अभी पूरा प्रोग्राम चला नहीं है आपका, अभी खत्म हुआ है। आउट वन इधर नीचे। ठीक है, यू गॉट द आउटपुट? यस सर, थैंक यू सो मच। या सर सर क्लास नॉट फाउंड करके एक्सेप्शन रेज हो रहा है। तो शेयर करो स्क्रीन अपना। सर मेरे भी सेम ही दिखा रहा है। क्लास नॉट फाउंड, जार टीवीएफ करो ना पहले, जार टीवीएफ। तो सीडैक निकाल दो। जार टीवीएफ किया सर पहले। इसका टीवीएफ में सीडैक है, उसका सीडैक के अंदर है। तो मैंने वही डाला था। मैं आप 17 यूज कर रहे हो क्या? 1.7 हाँ। 1.7 का कुछ प्रॉब्लम है उसमें, नहीं चलेगा। कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, अनसॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम। क्लास नॉट फाउंड नहीं आ रहा है। वो पहले आ रहा था, अभी ये आ रहा है। हाँ अभी सीडैक स्टॉक वॉल्यूम क्या है? वो ये पैकेज नेम है उसके, सीडैक पैकेज नेम है ना। आप यू आर स्टिल यूजिंग द ओल्डर वर्जन राइट? यस सर। 1.7 चलेगा नहीं, 1.8 ही लगेगा उसको। ये आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ है क्या? एरर है उसमें तो। हाँ तो फिर कैसे आपने उसको एक्सपोर्ट कैसे किया? सर अब मैंने आपको बोला था इट्स नॉट रनिंग, बट यू सेड यू डोंट नीड टू डिबग इट। अरे बट हाउ कैन यू एक्सपोर्ट अ एरर? वार्निंग इज ओके, बट एरर वाला कैसे एक्सपोर्ट कर सकते? तो उसने सिर्फ वार्निंग दिखाया और बोला एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये पैकेज डालो ना, पैकेज सीडैक। पैकेज सीडैक। सर मेरा ये लास्ट वाला रन नहीं हो रहा है। वेट सेव करो, कंट्रोल एस, अभी एक्सपोर्ट करो, राइट क्लिक एक्सपोर्ट। क्या क्या Go to your CDAC package now on the left hand side project. Yes, I'm there. नहीं सेम जार्स नेम सेम रखो, ओवरराइट करो ना वाला। ठीक है, हो गया। अभी दोबारा एक्सपोर्ट करो, एफटीपी करो, एफटीपी। अरे ओवरराइट होएगा, चिंता मत करो, ओवरराइट होएगा। अपलोड एंड रिप्लेस। ठीक है, अभी रन करो हडूप जार कमांड। अभी रन हुआ। ओके सर क्या टेल मी? लास्ट वाला रन नहीं हो रहा है, शेयर करके। हाँ करिए। ये वाला सर। फर्स्ट टेल मी दैट यस सर। आपने पाथ ही बराबर नहीं दिया है। सीडैक सेम है ना सर, सीडैक में आउट वन फोल्डर है। ओके एक मिनट सीडैक में एंटर करिए। वार्निंग आ रही है, यूज यान नहीं वार्निंग नहीं है, क्लास नॉट फाउंड आ रहा है, तो वो रन करो ना, जार टीवीएफ, जार नेम, जार टीवीएफ माई जार डॉट जार। आपका सीडैक के अंदर है, सो आपको सीडैक लिखना पड़ेगा स्टॉक वॉल्यूम से पहले। सो गो टू हडूप जार कमांड, स्टॉक वॉल्यूम के पहले सीडैक लिखो, सीडैक स्लैश सी। आप देखो ना सीडैक लिखा है आगे, देखा आपने, नोट किया? क्लास नेम के पहले पैकेज नेम लिखा है, तो आपको क्लास नेम कैसे मिलेगा? मिलेगा ही नहीं उसको। ओके दिस वन ना सर, सीडैक स्टॉक वॉल्यूम। हाँ डॉलर मैप क्लाउड। नहीं, नीचे वाला, थर्ड वाला। ओके सीडैक स्लैश स्टॉक वॉल्यूम डॉट। हाँ तो वो आपको बराबर क्लास नेम वैसे पूरा पाथ के साथ देना पड़ेगा, पैकेज के साथ। ये तो मिलेगा ही नहीं, क्लास नॉट फाउंड एरर आएगा।
अभी सर ये आया है। अभी आपका आउट1 ऑलरेडी बन गया है, तो उसको आउट1 को डिलीट करो। Hadoop FS -rmdir CDAC out1। ठीक है, आउट1 ऑलरेडी बन गया है वो। एरर से घबराने का नहीं, एरर को देखने का, एरर में क्या लिखा है उसको समझने का। कभी भी एरर को एरर को मतलब वार्निंग इज ओके, डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ वार्निंग and don't get worried about errors. Try to read the errors, what errors is mentioning. You can decode the error. अभी सर रन हो रहा है क्या? हाँ, रन हुआ ना, मैप 0%, reduce 0%, स्टार्ट हुआ ना आपका। थैंक यू मैप 100 या। सर मुझे भी एक एक्सेप्शन आ रहा है। हाँ सर, शेयर करो, एरर शेयर करो। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है सर। हाँ एरर इंडेक्स। आपने फाइल को सेव किया रहेगा। Did you open the file in Excel sheet yesterday? सर कर रहा है क्या कोई? नहीं सर। किया था आपने, वो फाइल को आपने डिस्टर्ब किया। You must have modified the file. Okay, input part does not exist आ रहा है ना? Input part does not exist. That means you have not uploaded the file. Yes, I have uploaded. nyc.csv. Or you have given nyc.csv on Hadoop. What command have you given? Hadoop jar. Hadoop F. Which one? You have given the wrong file name. See, it's a capital CSV. छोटा CSV होना चाहिए, small Oh, case. sorry. Enter. ठीक है, चल रहा है। Is it clear everyone? सर यूमे कैसे चेक करते हैं बताइए ना। क्या चेक कर रहे हैं? यूमे कैसे चेक करते हैं? क्या? Can you repeat? Sorry, हाँ। सर यूमे कैसे चेक करते हैं पूछना। यू में आप चाहो ना अपने आउट1 फोल्डर बना रहेगा CDAC के अंदर। CDAC के अंदर एक आउटपुट फोल्डर बनेगा। सर मेरे को एक्सेप्शन आ रहा है एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। फाइल दोबारा अपलोड करना पड़ेगा आपको लगता है। नहीं, वो आपका एरर क्या होना मैं समझ गया। यू आर नॉट गिविंग अ स्पेस। कहाँ पे सर? अरे बाबा, यू आर नॉट गिविंग अ स्पेस। CDAC nyc.ca हाँ। बाद में स्पेस दो nyc के बाद, दोबारा CDAC टाइप करो, CDAC/out1। So one is input and second one is output. There are two parameters, two arguments. Okay. Yes, sir. Everyone has got it? Yes, sir. So let's understand the process here. So basically when you run the code, you get these counters. These counters tell you a lot of information like how many mappers you ran. So we ran one mapper, one reducer. How many records were processed by the mapper? 7,35,026 input and output. How many groups did we create after shuffling? 203 groups we created. And the end result is 203 records output. And always have this bytes written 2918 bytes. Matlab jo bhi, it should not be zero. Huh? So your bytes written should not be zero. There should be some data written here. So this is your input file size. This is the output file size, 2918 bytes. If you look at your program output, this is your 2918 bytes.
or 2.8 KB, you can say. You'll get two files in your out1 folder. One is underscore success. That is just telling you that you got your program ran successfully. Now, why this is given? Normally, when you run a code, suppose you ran a code in SQL and you ran some query, SQL query, and you got 0 records. What does that mean? What does this mean? No matching. So there was no matching data, but the program ran successfully, right? Yes. So that is what it means, that your program, suppose this file is not created. Then you'll be worried that, okay, where did my file go? So this is a notification telling you that your program has run successfully. Whether this is being created or not created, that depends upon your logic. So that is a confirmation that success means your program has run successfully. कभी कभी ये बनेगा नहीं, so that means that there was no matching records for your query. Sir, Yeah, tell me. ये map input is equal to मतलब ये container ही हुए क्या? एक मिनट किधर की मेरा ही talking about. No, this is the number of records. Okay. Processed by a container. All the containers, not one container. Okay. So total number of records are processed by a container are 7,35,026 records. Okay. उसके बाद आपका reducer groups बने, shuffling groups 203. And the record output is 203. So these are 4 important parameters you should be always looking: input, output, shuffling, and reduce output records. सर GC मेमोरी यानी CPU मेमोरी क्या है? या GC टाइम एंड CPU टाइम? CPU time is your how much time you spend by your processor. GC means I have to find out. And this is your spilled record. So you have to spill how many times? So almost double हो जाता है. 147. 2 times you are writing records in the entire process. One at the mapper stage and one at the shuffling stage. So those are spilled records. How many times you're writing data to the disk? That is called spilled records. So let's understand everybody got the output here? Yes, sir. Yes, sir. So this output means what? Can you tell me what is this output means? What is this number means? Volume, total volume. Total volume. Total volume of that trade share. Yeah, so total volume per stock. How much volume we did for AA? And AI, AN, and all these different stock IDs. So let's now see the code. How we are able to process the data by first mapper and then by reducer. So let's take this. So there is a public class, that's a main class name. Before that, I'm importing a lot of classes. We'll look at these classes also in the course of the program. What are these classes meant for? So I've got a main mapper class code written here. One class for reducer. And there's one main method. So always the program starts from main method. Am I right, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So let's copy this code and try to decode this main method. So in the main method, the first line is about configuration conf, new configuration. Just give me a minute.
Configuration conf is equal to new configuration. That means, you remember a couple of days back, I discussed with you configuration settings, XML files. Default XML दिखाया था मैंने आपको परसों. Remember, everyone? No. This one. Well, if you remember this, am I audible? Hello? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. This one I shared with you the other day, that Yes. there are so many Hadoop properties which are there. So for MapReduce also we have one XML, MapRed XML. MapRed default. So there we have all the MapReduce properties. So what we are doing here, we are telling that the system should take all the MapReduce properties and Hadoop properties, HDFS properties for this program from the XML configuration settings. And if your system is having some site files, so it will take those site properties also. So we are giving the current configuration settings to this program. Now, in case at runtime you want to change some configuration, so you can give your own value, own property name, and you can give your, so here we can use max size. We can use max split size. So we can play with the split size, input split size. And we'll try to do it today only. We'll see that what effect it has. Then we are starting a new job. We say job.get instance configuration, and we're giving a job name. And then we are starting the new class. So we set the jar by class. So this is normally means that the main class should be this class, which is using the jar file. So whichever jar is having this main class, that jar is applicable. Set the jar by class. And now we are invoking the mapper class. This class gets invoked, or this mapper class gets executed in the program. So mapper class already we have written. We can just go and see how the mapper class processes the mapper data. So here we are saying mapper class extend mapper. Mapper is a parent class which is already a part of your import statement. You know the meaning of extends. What is extension does? Parent class को Inherit करता है. Inherit. So we are using inheritance properties in Java. So we are creating a new class by extending the parent class. And there are 4 parameters. So all mapper and reducer will have 4 parameters. Now, what are these long writable text, long writable? These are your data types in Hadoop. Long writable is representing long values. Text is representing string values. In Hadoop, we are using writable interface. Remember, we are using writable interface so that whenever data is transferred from one machine to the other machine, it is sent in a serialized form. So whenever we are sending data from one machine, for example, we are sending data from in shuffling stage, suppose. So data will not be sent in native format. It will be serialized. Serialized means it will be compressed and will be, you can say it will be decoded in some other language or some, compressed form. So it will be like, it will be not a native language, it will be in a different decoded language, you can say, which nobody can hack the data or nobody can hack the code for you. So you're compressing the data and converting into some sort of a binary code, you can say, serialized form. And then
sort of an encryption, you can say that we are encrypting the language or the code. So it's a compression and plus it is encryption. So, and then when we receive the data here, then the data is deserialized. So whenever we are dealing with Hadoop file system in MapReduce, we are using always writable for read and write. But internally, we have to process by using your Java programming data types. We cannot use these writables for processing. Now we have 4 parameters: long writable, text, text, and long writable. These are 4 parameters, 2 for input and 2 for output. So first parameter is called input key. An input key will be always your offset byte position of each line. If you take the first line, what is the offset byte position for letter N? It will be 0. If I take these 2 lines here, so my offset byte position for this first line will be 0. So I'll be putting here 0 here. So that is why it is a long writable, because the number will increase. For second line, it will go up to maybe 50 or 60. It will not be 1. It is not a record number or line number. So it is like, entire data 0, 1, 0, 1, 2, 3, and you keep on reading till the last character. And there's a backslash, and after that you come back here and you get a new number. So maybe it can be a 50 or 54, 55, 60, whatever. So that is why the data type is long writable for the first input key. Now second parameter is input value, which is the entire string. If I take the first line, so this is going to be my 0 and my entire string. This is going to be my input data for the first record. Actually, this data comes from record reader. Record reader is reading the data from your logical split and pushing that data into your container. So you get only one record in a container at a time of processing. Okay, so you are processing one record in the memory at runtime. And now what are remaining 2 parameters? They are the output key, output value. So our output key is what right now? Stock ID. So we intend to return stock ID, which will be of string type or text type. And output value will be our volume, which is going to be long. So internally it will become long writable. So that is why we are giving text and long writable. So most of the time, the first 2 parameters will never change. But the remaining 2 parameters you have to define as per your output. If your values are coming double writable or int writable, then you have to give int writable or double writable, float writable. Depending upon what data you're returning, you have to type in the 3rd and the 4th parameter. Now the map method, where we are going to process the data. So map method is actually running in a loop, but loop is not mentioned here. It is mentioned in the parent program in the mapper class. So we are going to process each line of code or each line of input data by mapper one at a time. So this is my input key. This is my input value. And I'm using another object called context. Now the purpose of this context is to use a write method to write the data back to your file system. It could be local, it could be SDFS. So what we are going to do, we are going to read each record at a time
process each record output and write the output to the file system, one record at a time. So what are we supposed to do in this? You're supposed to find key value pair. So I've taken the value, which is a text object type, converted into string first, and I'm using a split function on that value. So this is my value, right? Input value. I've converted into a string data, and I'm using a split function. If I use a split function, tell me what it creates in return. If I create a split function, if I use a split function on string, what does it create? It creates a string array. So it creates a string array. You know what is string array, everyone? Are you aware of string arrays in Java? Yes, sir. So if I say string array here, and if I say names 0, what will I get? Yes, sir. A, right? So this is what we are doing. We are converting this entire data into string array by using split function. So when I use a split function, each element will become an array element. So split always converts your data into array. Please understand, and that to string array. So tell me what is str0 will hold in this case? NOIs. str0, NYSE, right? NYSE. Yes. And str1 will hold your A stock ID. And str7 will hold your volume. Volume will be a number or string? ये number रहेगा कि string रहेगा? String right. String. String will remain a string only. So that means you have to convert this into a number first. So we are converting, see here, long dot parse long str7 into vol variable, which is long type. Because my last parameter is long type, see. So my output key is text type, so that is not a problem, it is string. But my output value should be long type, so I have to convert that into long. So now my both the key value pair are ready. I can now write to the output. So I have to typecast into the writable interface, text and long writable, and I'm writing my data to my local file system. So this way I will process each line of code. So when you saw that record, right, input records. So we were running this map method 7 lakh times. So I'll be getting this output now. AEA 205500. And this will be written to my local system. So in the program, I go to the next record. I read the next record by record reader. Suppose this is 50. This is my new value. Again, the same process. I'll use a split function. I'll extract the key value pair. I'll convert the 194,300 into a number long value. And then write my output here. So this way I am reading each line of my input data, processing by the mapper and writing to the file system. So at any point in time, I am processing only one record at a time. Is it clear now, everyone? Yes, sir. Yes, sir.
Now, yesterday I told you that we can only run mapper job, right? So if I run only mapper job in my program, this data will become the final output data. So let's run the mapper job in our system and we can see this output as a final output. Now to implement mapper job only, I have to make this set num reducers to 0. That means I am telling my program my number of reducers should be 0. What does that mean? False. No, that means I'm not telling the program to run the reducer, only yes, mapper sir. job, no reducers. So I'm saying 0 means no reducer. 0 and 1 not binary. Huh? Don't get confused. 1 and 0 is not a binary here. It's a number of reducers. If I give 5, that means 5 reducer I want to run. Okay. So 0 means 0 reducers. So now I'm running 0 reducers. What does this mean? That means only mapper job. So make the changes, save your project and update your jar file again. So whenever you make your changes, you have to export and update your jar and just say finish and you'll get overwrite. So again, you have to do export FTP. Upload and replace. And now run it. So now I'll be using another folder out2. Because out1 is already created. I don't want to delete that folder. I just change the folder name. So now I'm running only a mapper job, no reducers. See, only mapper job I ran, no reducer. So there are map input records, output records, no reducer records are there. And now my output is very big. So my output is very big. I can go and verify my output here. And now my file name is part M00 because it is coming from the mapper side. And see here. So every record I've extracted key value pair and created my mapper output. So please follow the same thing, everyone. Make your reducers 0. Update your jar file, export your jar file and run it again with a new folder name. सर ये कोड पाइथन में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, कोई भी लैंग्वेज, पाइथन, एसक्यूएल, कुछ भी। SQL में भी लिख सकते हैं मतलब सर? किसमें? SQL में भी लिख सकते हैं तो हाँ, एक लाइन में भी होगा। उसके लिए हाइव लगेगा। और सर कंपनी में कोड लिखने का काम हमें करना पड़ता है कि दूसरा कोई देता है? एक कंपनी आपको खाली बिठाने के लिए पैसा देगी। अच्छा। अरे डेवलपर हो तो कोड तो लिखो यार।
कोडिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो हमारा पाइथन अच्छा हुआ है, मतलब पाइथन में हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये जावा थोड़ा सा। अरे लैंग्वेज का आप लोग चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड द हाडूप कॉन्सेप्ट। यस सर। लैंग्वेज कोई भी आप लिख सकते हो। हाइव जब आप अपन हाइव करेंगे ना, तो आप ये मैप जावा कोड भूल जाओ। बट प्रॉब्लम क्या है, हडूप कैन ओनली प्रोसेस डेटा इन जावा। तो आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी पता होना चाहिए, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन इनसाइड। अगर पाइथन में भी लिखेंगे तो एक्चुअली ये डेटा इसी में प्रोसेस होगा, जो मैंने आपको लिखा है, बताया स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली। सो यू शुड नो द प्रोसेस, देन यू कैन राइट कोड इन एनी लैंग्वेज। सर ये रिड्यूसर टास्क 0 करके यहाँ पे ही सेव करेंगे। सॉरी, कैन यू रिपीट? अभी हमने स्टेट नम लाइन नंबर 59 को 0 टास्क किया ना। हाँ, अभी सेव करो उसको, प्रोजेक्ट को सेव किया। यस सर। और बाद में उसको एक्सपोर्ट दोबारा करना पड़ेगा जार को, तो जार को ओवरराइट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, खाली फिनिश पे क्लिक करिए एंड दिस लाइन विल कम, डू यू वांट टू ओवरराइट? यू हैव टू जस्ट से यस। सो you are overwritten the jar and then you do FTP again. Go to your FTP site and bring your jar again. And now you can use upload and replace. So your old jar will be written by new jar. And then run it. This time you have to use a new folder name, out2. You can't use out1 because out1 is already created, and there is no need to delete out1 because out1 is having some data with you. So you can have another folder, out2. And don't worry about the Java code, because what I understand that after looking at that code, all of you are getting little confused and little, subdued. So don't worry about that code. In Java code also, you'll find that maximum lines of code are repeating. Only the mapper and the reducer code you have to change, logic you have to write. सर वो एक्सपोर्ट करने के बाद हडूप के इस पे ये करने का है क्या? FTP export किया successfully? Yes sir. अभी now you have to do FTP. Okay. You have to transfer to the client side again because आपके पास जो client पे jar है, that is an old jar. Okay sir. So that jar has to be overwritten and then run the jar again. So now you're running the jar with only mapper code, and you can see the mapper output in your output file system. हाँ सर, मैंने रन किया है उसको। वो मतलब फर्क कैसे रहेगा, कैसे ऑन करेंगे? सॉरी, फर्क क्या? Means when we have one reducer and without reducer, what will be the difference in both the outputs? This is the output. Now you're getting data from the mapper side, key value pair. Okay. Now we have to cat that file part and. क्या करना है? कैट नहीं करना है ना, खाली दिखाने के लिए मैंने बनाया आपके लिए, मतलब टू मेक यू अंडरस्टैंड।
We don't have to do with this file. You are able to see this data, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is just to make you understand that after you run the mapper internally become like this. The data is like this internally when you are writing the mapper code. This is just to make you understand how the mapper data looks like internally. Now after this, what will happen, guys? Suppose this is my data. So suppose if I'm running map and reduce both, then what will happen? Come on. Sort and shuffle, sir. It will now get the data will get shuffled with the sorted keys. Yes. So I'll have all the values here like this. For every key. So ARR, suppose there is some ARR key or AZZ. So likewise, there are multiple keys will be there. Now for this, we are not writing any code. In the program, you will not find any code for shuffling your data. So there is nothing. This is done by the system. So when you write the reducer code, this becomes the data for your input for your reducer. Let's look at the reducer code now. So reducer is now going to read data from the shuffling area, not from the mapper data. So this data becomes input. First, the 4 parameters, input parameters will be always the mapper output parameters. So in the mapper, we are returning text long. So whatever mapper returns, that becomes your input to your reducer. So if you are returning text int writable in the mapper, reducer input will become text int writable. And whatever you want to return from reducer, that will be your output parameters. Now we are declaring one local long writable result variable, it's a private variable. And now the reduce method, just like we have a map method, the reduce method will take one line at a time. So it's going to process the first record in the reduce method. So what will be my input key? Input key will be AEA. And what are my iterable values? These are my iterable values in the list. So what is my key here? Key is AEA. And values iterable are all my list values. 205, 194, 300, and so on. And again, I have a context for writing my data back to the file system. Now I'm running a for each loop. I'll be taking each value in my val variable. So first I'll be taking 205500. I can retrieve the value of the long writable by using a dot get function and put into sum. Just give me a minute. So we are taking the value in a sum variable, and then we are iterating all the values one by one. So in a way, we are adding up all to the sum. And that sum we are passing it to result variable. And then we are writing the output key comma result. Alternatively, we can also write like this. Suppose if you don't want to create a result variable, you can write like this: key new line long writable sum. So you'll be writing the output now AEA total. And then you go to the next ID ARR AZZ, and then you take the total of that. And that is the reason I have initialized my sum as 0 here. If I don't initialize the sum 0, then I'll be adding up to the previous value, which I don't want to. So initialization should be done inside the reduce method, not before.
declaring an initialization should be done inside the reduce method. So whenever we are using a new ID, we are starting from sum 0. अगर ये बाहर लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? हेलो, अगर ये लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0 बाहर लिखेंगे तो क्या होगा? ओके, पहले वाले का भी ऐड कर लेगा दूसरे में, which is not right. तो पहले वाले भी का भी ऐड कर लेगा, कंटिन्यूटी में ऐड करता रहेगा, इसलिए इसको यहाँ अंदर लिखना जरूरी है क्योंकि वो रीइनिशियलाइज हो रहा है। जब भी नया की आ रहा है उसके साथ रीइनिशियलाइज होएगा। Are you getting this, everyone, or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So we'll take some more examples, or then we'll try to solve some more examples. So, and I'll give you some assignment also so that you can try it on your own. Okay. So can we take a break now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll meet at 12:30 then. Okay, sir. Okay. Thank you. Program also. Let me just share my screen. Now I'm going to give you another program using the same data. Suppose we have this data with us. And we are supposed to find all-time high price for each stock. Remember, every day we are achieving some sort of high column every day. But overall high, how do we find out? All-time high. सर वो दोनों कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उससे जो एक लिस्ट बनेगी ना कि वैल्यू की, उस लिस्ट को अपन सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे पहली वैल्यू लेंगे वो ले लेंगे, मैक्स लगा देंगे। हाँ, मैक्स लगाएंगे, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैक्स से भी we can find the max. So basically the key would be stock ID here. On the basis of date होगा ना सर? नहीं, डेट नहीं, कितने डेट तक चाहिए? नहीं, यहाँ पे अपन पूरा डेटा ले रहे हैं, डेट फील्ड नहीं पकड़ रहे हैं। Okay. So in this case we are not taking the date field. जितना भी डेटा है ना, पूरा डेटा पे we are taking. So value will be high price. High. Suppose we got high column here 442. So AEA 4.42, AEA 4.54, high column, second column, and AEA 4.69. So after we sort and shuffle, we'll be getting this output. Then we have to just find the max. So we'll get the max for AEA 4.69. In this case, I'll be using my second value as double writable, not long writable. This will be my text type, but this will become my double writable. So let me share the code with you. We'll run the code.
So VM all-time high price. So please download this file and create a new class in your project. No, project not required. You have to add a class, simple. And it would be A capital, T capital, H capital. Huh? Copy your code. So when I copied my code this time, I did not get any error. Can you tell me why? I did not generate any error this time. Because we have already jar file already have the jar file. Because in the project, the reference library is already having the required classes. So there is no need to, there will be no error generated this time. So all I'll do, just update my jar file again, same process again, which I did earlier. Next and finish. And I'll transfer my jar to my VM. And this time when I do jar TVF, I'll find 6 classes there inside. If I run jar TVF command, so there are 6 classes. So I've added another 3 class files, all-time high, all-time MapReduce class and main class name. सर क्लास क्रिएट करके वो कोड कॉपी करना है ना खाली? हाँ, और jar को अपडेट करना है, jar को एक्सपोर्ट करना है. And now you can run the code. So tell me in this code, what changes do I have to make? Out 3. Out 3. And apart from that, out 3, okay, good. Apart from that, stock volume की जगह all time high. हाँ. So my driver class name will be all time high. Stock volume नहीं रहेगा इस पर. Because my code is written in all time high. Input file is same. That is not going to be changed. And that's it. So here I'll be getting all time high price for each stock. So there is output, same number of records are processed, 7,35,026. Same number of records are created, 203. But this time the bytes are little less because the numbers are in decimals. So you can see it's not like 3 KB, it's like around 2 KB. You can go and check our U. Out3 folder got created. Now we're getting part R00. So these are my different stocks with high prices. सर वो एक बार प्रोसेस बता दीजिए ना. एक मिनट. The price of AEA is 23.94.
All-time high of AE is 23.94. So have you downloaded the file from the Google Drive link? Yes, sir. I have Now you have to created create a one. new class Created. and then you have added all this. किया आपने add किया? Yes. Now you do the export part again. So we can do this in the same folder itself, right? So in the same folder, the CDAC folder. Same project. We are not changing the project. Why you want to change the project? Otherwise, every time you have to add the jars. It will overwrite, na Sunbeam? Why overwrite? We are creating two classes, no? No, sir. My jar file will be overwritten. Will be overwritten. Will be overwritten. Overwritten मतलब यहाँ पे छह क्लास बन जाएंगे आपके, तीन इसके तीन इसके, तो जार के अंदर 6 क्लासेस आ जाएंगे. मैंने आपको दिखाया ना जार TVF करके 6 क्लासेस. There will be 6 classes, 3 for all time, 3 for stock volume. So export करिए and then update your jar. Just say finish and it will ask you whether you want to overwrite. Say yes. Just click yes here. When I import my jar, it will show the when I do TVF on my jar, it will show all-time high ka map reduce as well as stock volume, right? Yeah, all 6. No, there will be 6 class files. Are you all able to see 6 class files, everyone? Yes. Asking me to overwrite. Sorry? It is asking me to overwrite. Should I overwrite? So yes. Because you have to change your jar every time you make your changes in your project. Jar is related to the project, not to your class files. जो भी jar बनाते हैं वो project related होता है. सर नहीं बता रहा है क्लास 6 फाइल्स नहीं बता रहा है क्लास फाइल्स. Okay, share your screen. Upload a file by FTP. Okay. FTP किया कि नहीं किया आपने? नहीं किया सर. हाँ तो फिर कैसे बताएगा? पहले FTP करो उसके बाद बताएगा ना कि अभी आपके पास वो पुराना जार है क्लाइंट मशीन पे. सर वो अपलोड करने के बाद क्या करना है? जार देखा TVF करके 6 क्लास फाइल दिख रहा है? नहीं सर वो नहीं जार TVF. Okay. And now run the command hadoop jar name all time high input output. सर फिर भी नहीं बता रहा है अपलोड करने के बाद. अपलोड एंड रिप्लेस किया उसको? हाँ किया सर. Okay, share your screen. Go to your Eclipse. Eclipse में जाओ, एक्सपोर्ट करो दोबारा. ओके, नेक्स्ट करो, फिनिश करो. एक मिनट ना मुझे विंडोज में दिखाओ ना, वहां पे बिन फोल्डर में जाके 6 जार बने क्या? इधर नहीं, वो बिन फोल्डर है ना आपका इक्लिप्स वर्कस्पेस. इधर नहीं, बिन फोल्डर. फाइल्स में क्या सर? हाँ सी ड्राइव में. सी ड्राइव में है ना इक्लिप्स वर्कस्पेस. सी ड्राइव में यूजर रहेगा आपका. यूजर नेम इक्लिप्स वर्कस्पेस फोल्डर रहेगा एक में. है ना इक्लिप्स वर्कस्पेस सेंटर में ये. हाँ, CDAC में जाओ, बिन में जाओ, 6 दिख रहा है ना इधर, तो जार में 6 आना चाहिए. मेरे को 3 ही आ रहा है सर जार में. तो जार एक्सपोर्ट करो ना, जार एक्सपोर्ट करो. जाओ एक्सपोर्ट में जाओ, अपलोड करो. जार में जाओ ना, FTP में जाओ. FTP में हाँ,
यही ना सर? हाँ यही है, ओपन करो, अपलोड रिप्लेस होने दो। 7 KB हो गया ना, 7 पहले 7 KB की था, पहले 4 KB था। अभी टर्मिनल में जाओ, अभी आया ना 6 के 6। आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहेगा, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा। सर या टेल मी। सर मैंने विंडोज में सर वो 6 डॉट क्लास फाइल आई नहीं है सर, और मैंने इंपोर्ट भी किया, लेकिन ये जार TBF का है ना कमांड, वो रन करने के बाद भी उधर 3 ही दिखा रहा है मेरे को फाइल्स। एक्सपोर्ट किया आपने ये अपना FTP किया? हाँ सर किया था मैंने। अपलोड रिप्लेस किया FTP में? हाँ सर किया है सर, 7 KB का आ रहा था, किया मैंने। पॉसिबल नहीं है। शेयर योर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। ये देखिए सर इधर। कैन यू शो मी योर विंडोज का बिन फोल्डर? यस सर। 6 है ना, दोबारा एक्सपोर्ट करो ना इक्लिप्स में जाके, इक्लिप्स में जाके, नहीं इक्लिप्स में, इक्लिप्स में जाओ, एक्सपोर्ट करो। 4 KB का है सर इधर माइजार FTP में। हाँ 4 KB का 4 KB का ही है, वो एक्सपोर्ट ही नहीं किया। एक मिनट, दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं राइट फ्रॉम बिगनिंग। नेक्स्ट करो, फिनिश करो, ओवरराइट करो, यस। सर उसने सिलेक्ट नहीं किया था राइट। सॉरी, कैन यू रिपीट? He didn't select the It was already selected, Nishan. It was already selected. By default it will be selected class and दोबारा एक्सपोर्ट कर लो, दोबारा एक्सपोर्ट करो। चलो लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन। नेक्स्ट करो, सिलेक्टेड है ना सब, फिनिश करो, अभी FTP करो। नहीं आपका किधर से ले रहे हो आप? ये डेस्कटॉप से ले रहे हो, वो आपका जार कहीं और जगह सेव है। यही सेव है क्या? 1242 का यही है, राइट, गुड। ओपन करो, अभी हुआ ना 7 KB? हाँ सर वो पहले भी हुआ था सर 7 KB। अभी चलो ना उस पर, टर्मिनल में जाओ। पहले 4 KB दिख रहा था भाई, वो कोई बोला 4 KB दिख रहा है, अभी आया ना सब, ऑल टाइम हाई। Everybody got the output here? Yes, sir. Yes, sir. Let's see the code now. So the main method is exactly same. There is no change. Only I have changed the project name or the use case name. Let's look at the mapper code now. And the mapper code, we are taking input parameters are same, long writable text. There is no difference. But output parameters are now text double. Why I'm taking double as a output parameter for? Sir, high is in double. हाँ, because it's a decimal value. Double decimal value है. अगर मैं long लिखूंगा तो I will not get the decimal part. I'll get the only the main. So here I've changed my codings pattern. I've declared two variables first, text and double writable. And then I'm splitting my string value, extracting the high column. Now the index position is number 4. High column is in index number 5 actually, column number 5 in my data. Yes. So that's why I'm using index 4. Stock ID is str1. So I'm keeping that as it is. Stock ID is my new text type. High column is my double writable type. So I'm passing the value. So I'm not writing like this. So this is not required. So I can now write without using typecasting because I've already set the variable.
In the previous case, we were typecasting at runtime. But I don't need to typecast because both are Hadoop variables. Stock ID is text type and high column is of double writable type. So this is going to create key value pair. And how did we find the max? So when we found the data like this, so this becomes our input data, right, for the reducer. This data becomes our input data for the reducer. And look at the reducer code. We are just finding the max element here. So this is our business logic. In the previous case, we used sum. So again, I've declared result variable. So my key will be stock ID. Values are double writable. I've declared two variables here before the for loop, initialize them to 0. So whatever value I'm capturing, like $4.42, I'll be capturing in a temp val, comparing this with the max value. If it is more than max, then I'm giving the max as a new value. So this way I can iterate all the values and find the max value out of it in my system and get the result. And then I'm able to write my data to the output. So this logic is only we are changing. If you look at the code, in the mapper code, we are just changing the what data we are extracting, key value pair. And in the reducer code, we are just changing the logic, the reducer logic. So this way we are getting the all-time high price. Now on the same terms, everybody understood the code here, how we found the max. Is this code understood by everyone? Hello? Yes, sir. Yes. Have you understood? Yes, sir. Now I'm asking you to write some code. So that's why I'm asking you. So again, on the same pattern, you have to find now all-time low. So on the same pattern, you have to find now all-time low. For each stock. So what will be your key value pair in this? And what logic will you apply in the reducer? ID and Keys keys and low ID and low will be low the price. value. Low price, right? So stock ID and key would be your stock ID. Stock ID. And value will be your low column. Low column. Low. So low मिलने के बाद क्या होगा? What will you do in the reducer? Suppose you got $4.21. So what will you do with this data? The data will get shuffled. After that, how will you find the low? Mean. Min of low, right? Yes. Min of low. Yes, sir. So you'll find the min. So यहाँ पे min है 4.4221. This is my all-time low price for this stock. So now can we write that code, all of us? Yes. So start writing the code. Come on. Create a new class. Create a new class, all-time low. A capital, T capital, L capital. You can copy the all-time high code here. And put into all-time low. Now what changes will you make here in the class name? All-time low. हाँ, so दो जगह changes करना है, यहाँ पे और main method में भी.
In the main method also you have to change and make it all-time low, because that class we are using jar. And you can give your lowest price sort of highest. So apart from this two changes in the main method, I don't think so any changes are required. Now you tell me what changes we have to do in the mapper class. Sir, we will double low and the index will also be changed. Index will also. इंडेक्स क्या हो जाएगा, पहले तो लो कर दो उसको, LOW कैपिटल, and double low small l. इंडेक्स क्या रहेगा 5, राइट? Yes. Yes. 5 के बाद है ना, और यहाँ पे हो जाएगा लो डॉट सेट एंड स्मॉल लो. कैपिटल LOW. So our mapper job is done. देखो कितना जल्दी हुआ, hardly 2 minutes. First change the main method. Main method में there are two changes. Have you done the main method changes, everyone? Yes, sir. All time low and the name of the program. That name is not important, but we are just giving a name. So it's just to make you understand. And then change the mapper code. So we are taking stock ID as key and value as the low column. This is not required. You can comment, uncomment, remove this. But can you repeat that changes? The changes in the main method. First, the class name will be all-time low, the public class, because you have copied the all-time high program. So you have to change the public class name as per your program name. It should match. Suppose if you are given small l, give small l. The program name should match the public class name. And then the set jar by class, you have to give the driver class name. And you can change the name of your use case or of your case study. Make it lowest price for each stock instead of highest. So these are two changes in the main method, apart from your driver class name, main class name, sorry. And then we have to make some changes in the main method, sorry, mapper class. So input parameters, long text, that will not change. Output is text double only. So again, this is not going to change. The value for high instead of high will be taking low. And index position we are changing. From 4, we are making it to 5. And we are changing the value of the variable. That is, instead of high, we are making low. And we are passing low dot set low. And the context dot write, we are using both the variables, stock ID and low price. So we are extracting each element, stock ID and low, from each record and writing to the output.
मैपर कोड हुआ सबका? Yes. Yes. रिड्यूसर पे भी काम करो अपने आप, डोंट वेट फॉर मी। डबल मेन वैल्यू, टेम्प वैल्यू ऐसे का वैसा रहेगा। टेम्प लेस देन मिनिमम वाले। आप लोग करो और मुझे बताओ आउटपुट आया कि नहीं आया। मुझे ए का रिजल्ट चाहिए, आउटपुट। ओके सर। मैं रिड्यूसर का कोड बाद में आपको बताऊंगा, पहले यू ट्राई। ए का मुझे आउटपुट चाहिए। या नवीन, टेल मी। नवनाथ, so tell me the output for AEA, minimum all time low price. Now that is for all time high, Shubham. 23.94 was all time high, right? See, I'll show you the output. 23.94 we got all time high. So it cannot be all time low. Have you selected the right index, STR5, Shubham? वो सर पिछला वाला रन कर दिया था। अच्छा अच्छा। सर या टेल मी। सर वो जार क्रिएशन फेल्ड बता रहा, जार एक्सपोर्ट के कर रहे तो इसमें एरर है कुछ आपके प्रोग्राम में? एरर है तो नहीं हो, एरर है, कोई क्रॉस साइन है यहाँ पे प्रोजेक्ट में कहीं क्रॉस? सर मुझे व्हाइल एक्सपोर्टिंग बोला कि एक्सपोर्टेड विद कंपाइल टाइम। नहीं, शेयर करो स्क्रीन। 23.31। नो, रॉन्ग आंसर। स्टॉक आईडी यही है, पहला वाला नहीं, यही है। I also got the same sir, 23.31. ए की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला रिकॉर्ड का बता रहे हो क्या? No sir, AE. नहीं, ए कोई दूसरे आईडी का तो नहीं बता रहे हो बाय मिस्टेक? चेक करो। अल्फा इंग्लैंड अल्फा, ए। No, it is not 23.30 on web. Sorry. Hello? Check your code. Hello, मुझे sir. सारे वैल्यू 0.0। Yeah, ma'am, tell me. Sir, I'm getting an error in map class. Okay, share your screen, ma'am. Yes, sir. Shubham, 23.94 is not the right answer. Sir, it's screen visible. Low dot set low, na small low. How can you define two variable as same variable? जो Java variable is 20 line number 27, that should be small l. Because that is with capital L, you have defined a double writable variable. Yes, yes. Thank Okay. you, sir. Yes, Okay, sir. ma'am. Thank you. Because you can't declare same variable two times in two different types. Yes. Try देखो मैपर और रिड्यूसर कोड में क्या प्रॉब्लम है। I will not tell you till you are not getting the answer. सर वहाँ
थोड़ा कोड चेंज करना पड़ेगा ना रिड्यूसर में। करना ही पड़ेगा ना, बिगर चेंज किया आउटपुट कैसे मिलेगा? वो तो फिर आपको मैक्स, आप मैक्स ढूंढ रहे हो कि मिन ढूंढ रहे हो? मिन हाँ का वही कोड, तो वही। मिन का कोड लिखना पड़ेगा ना यार। हाँ तो मिन का लॉजिक लिखो, वहां पे मिन का क्या लॉजिक रहेगा? आप लोग क्या लो का मैक्स ढूंढ रहे हो? लो का मैक्स तो नहीं ढूंढा किसी ने 23.31 में? लो प्राइस का मैक्स ढूंढ लिया आपने, लो का मिन ढूंढना है। You have to make some changes here in this code. So what changes have you done? Tell me here. ये मिन वैल्यू का असाइन क्या करोगे नंबर? डबल मिन वैल्यू 0 रहेगा कि कोई अलग नंबर रहेगा? Yes, I'll tell me. Can we keep it 0? No, sir. Then what number we should assign, initialize? We can take this integer dot max. Max. What is the meaning of this integer dot max value? विशाल ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 0 इनिशियलाइज किया है उसको, तो 0 से कोई कम नंबर हो सकता है क्या मिनिमम? विशाल you're getting 0 because you have initialized min value as 0. So we have to take this as a bigger number, right? Yes. And now what changes we have to do here? Tell me. We have to change the Reverse sign. less than. Yes. Yes sir. And we have to make it min value. Min value. Min value. And now min value. That's it. बाकी है क्या? छोटा सा तो काम था इसमें. इसमें मैजिक था कि you have to take a bigger number. Either you would have given 10,000, 1 lakh तो भी चलता. But I have taken max value, integer max value. And this way I am able to get now output. Save it, Control S. Export. Finish, yes. Then go to this. So 0.8. 0.8. That is the right answer. 0.8 is the right answer. Nishad, you're right. So we can now run it on our system with out 4 and all-time low. So 0.8 is the right answer. जिसका 23.31 आया, डिफरेंस मालूम पड़ा है? एरर कहाँ पे था? Yes, sir. So what was the error? You have taken a wrong index value. Yes.
So right answer is 0.8. So you can understand this talk has varied between 23.94 and 0.8. So we got the output here. Out for, if you go to AEA, 0.8 is the answer. So everyone run the code and please get the output. सर वो कोड बताओ ना एक बार. So here you have to define min value as max value integer dot max value, और या फिर कोई बड़ा नंबर आप दे सकते हैं 10,000 या 1 lakh. Yeah, Simran, you're right. 0.8 is the answer.
Have you all got the output? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I will take one more example. So we are actually trying to solve different types of business logic here. In the first case, we used plus. In the second case, we found max. In the third case, we found min. So I want you to write one more program, and where we can find average closing price. Find average closing price for every stock. So what will you take your ID as stock ID, right? Everyone, key as stock ID. And value will be closing price. This one. And what logic will you apply in your reducer? How will you find the average? To add all the closing prices and divide. Add all And closing the prices. number of or something. days. And details. And number of elements, divide by number of elements. Yes, sir. So write that code now. So we'll create one more program here. Closing average. So new class, we can say closing average, CNA capital. Change the class name, closing average. The main method also you have to make it close average, closing average. So here in the text, I'm typing average closing price. And now the mapper class. I can put a capital C close. And what will be my index position? Six. And I'll put here capital close set, small close. And capital close is a value. So this is a mapper data I've done for you. Reducer, I want you to write on your own and get me the answer for AEA.
Anybody trying or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, take your time. सर वो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लेना है? नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंटर मानना पड़ेगा। और वैसे लूप लगाना पड़ेगा ना एक काउंटर के लिए, या सेल लूप में कर सकते हैं? फॉर के अंदर ना आपको CNT काउंटर प्लस प्लस कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो, हाँ, और उसके अंदर कोई वेरिएबल को प्लस प्लस दे दो तो काउंटर ऐड होता रहेगा। सर वो ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर डबल राइट के बाद क्लोज वैल्यू इक्वल टू वैल्यू डॉट गेट, और उसके बाद काउंट प्लस प्लस। हाँ, तो काउंट करेगा ना। so no, it is not 3.3 हमें, it is 10.5656. Answer for AEA is 10.5656. Just check your index position. It should be 6 हमें। Sir, what is the answer, sir? I have written 10.56. AEA 10.56. Sir, I've got the answer. 10.5656. That is the answer. So what you have to do in this code, you have to make two variables. So you can't take max value, you can take total, right? So you'll be taking a total and CNT, one more variable, double average. So you can say total plus is equal to val dot get and you can add here CNT plus plus. So when your loop is complete, total and count is complete, you can find the average. Average is equal to total divided by CNT. And you can put average here. So that's it. And just few lines of code changes, you can find the output. So let's run it now. Sir, the CNT should be integer, huh?
Because Then you have to we do are typecast. Then you have to typecast. It is better you keep all the variables same data type. okay, sir. Otherwise, sometimes double divide by integer may not work. Sometimes typecast issues comes. Then you have to do the CNT double of integer of double, make it double. So I'm maintaining my typecast. That's why I'm using double in all the, because then otherwise sometimes it gives you issues. So we are done with this. We'll now export the jar. So jar got updated 1330, you can see. And it's gone up to 14 KB. Earlier it was 10 KB. So now my programming name is closing average. Out file. Yeah, Malkit, your answer is right. 10.5656. Yeah, Nishad's right, 10.56. There it is. 10.5656 continue. It's a long number. Yes, Sonali, you're right. So you understand the use case here. The business logic is mainly written in reducer side. In mapper, we are just filtering our data, and whatever actual code we are going to process will be written at the reducer level. So we have done 4 examples today. One for sum, max, mean and average. So all we are managing in at the reducer side. Whatever algorithm we have to write at the reducer level. Select for code. Yeah.
Have you all understood the code here? In the for loop, we are adding up the numbers and counting the number of elements. And then we are dividing. After we finishing the loop, we are finding out the average. Total divided by count. Did you all get the answer, everyone? Answer मिला सबको 10.5656. Yes. Yes. Yes, sir. Okay, so we can take a call off today, and I'll meet you on Monday evening now. Anything else? Any questions to be asked? Yes. Hello. Yes. Anyone has any questions to be asked? सर जब अगर ये पाइथन में कोड कर लेंगे तो उसमें तो क्लास फाइल नहीं होंगे ना? पाइथन के साथ एक्चुअली एक स्ट्रीमिंग जार रन करना पड़ता है. तो पाइथन जब .py कोड लिखोगे ना आप, हाँ सर, उसके साथ एक्स्ट्रा हडूप स्ट्रीमिंग जार होता है, वो रन करना पड़ता है. अच्छा, टाइम मिलता तो मैं नेक्स्ट वीक दिखाऊंगा आपको हाउ टू रन इट. सर ऐसा कंपलसरी होता है कि जावा ही में करे या फिर पाइथन में करे तो भी चलेगा? कोई भी करो, अल्टीमेटली प्रोसेस जावा में होगा. अच्छा, क्योंकि हडूप को खाली एक ही लैंग्वेज आती है, जावा. तो आपका इंटरफेस लैंग्वेज कोई भी रह सकता है, एसक्यूएल रह सकता है, पाइथन रह सकता है, दूसरा कोई अदर लैंग्वेज भी रह सकता है, बट उसको वो इंटरफेस को काम होना चाहिए कि कन्वर्ट योर कोडिंग इनटू जावा कोड. नहीं तो प्रोसेस कैसे करेंगे जावा? यान कैन ओनली प्रोसेस जावा लैंग्वेज, यान एंड मैप प्रोड्यूस. ओके सर, फिर अगले लेक्चर में जावा का बता दीजिएगा एक बार. जावा का कि पाइथन का? पाइथन का. ठीक है, नेक्स्ट वीक बताता हूँ. थैंक यू सर.